Okay, we are live. Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. It's a lovely Tuesday evening. It's 16th of September. How many of you guys have joined the stream? Please let me know in the chat. I can see Shrutam, Riva, Mast, Kitsune, Aradhya. Good evening, guys. Good evening. Welcome to the class. चलो ठीक है स्नेहा इज हियर सारांश इज हियर सिद्धि इज हियर ऑलराइट चलो ठीक है लेट्स लुक एट टुडेज एजेंडा what are the things which you're going to discuss today? Three primary topics. First is the headline topic, the front page news, the waqf changes से related जो Supreme Court decision आया है. It's rather a stay rather than a judgment. Temporary stay लगाया उन्होंने कुछ provisions पे, तो उसकी बात करेंगे. Then there is an editorial article on mental health, especially mental health being recognized as a fundamental right. So वो important है, उसकी बात करेंगे. Then there is an article later in the newspaper which talks about India getting a license to scour minerals and metals from the Indian Ocean. तो this is something different. इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे. उसके अलावा आज के एडिटोरियल सेक्शन में उतना कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं नहीं. अच्छी मतलब रेलेवेंट आर्टिकल ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है. We'll look at them while we are on the newspaper. Then, of course, as today is Tuesday, we'll be doing our Menti quiz as promised on geopolitics. Easy quiz है आज का, काफ़ी ज़्यादा easy quiz है, I would say. So it would all come down to how fast you guys are, how speedy you guys are in answering the questions, because questions बहुत easy रखे हैं आज मैंने, ठीक है? Then we have vocab based 3 new words as always. That is the agenda for the day. I hope all of you are here on the stream. आज का मेंटी टॉपिक इज जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन, ऑपरेशन सिंदूर, M23 rebels, Nepal protest, Bangladesh protest, all of those things. रीवा, मैंने आपका डाउट चेक कर लिया है, मैं बस आपका रिस्पॉन्स टाइप कर दूंगा क्लास के बाद. आई वाज अ लिटिल अंडर द वेदर यस्टरडे, इवन टुडे एज वेल. आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो आई एम स्टेइंग अ लिटिल अवे फ्रॉम स्क्रीन्स. जैसे तैसे क्विज बनाया मैंने आप लोगों का, बट हाँ आज रिप्लाई कर दूंगा आपको, पक्का प्रॉमिस. ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का डिस्कशन. ओके, चलो लेट्स मूव टू द न्यूज़पेपर देन. Just give me a moment. Let me present the newspaper for you all. Okay, here's the first article. Supreme Court stays arbitrary waqf changes but upholds the act. तो वक्फ एक्ट को जो है उन्होंने रूल आउट नहीं किया है. कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं उनको अभी होल्ड पे डाल दिया है. वक्फ क्या होता है? वक्फ, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो बाय नाउ. वक्फ इज अ डोनेशन made for the community, where usually property is donated for religious purposes, Islamic law में. तो जैसे अगर आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड है, आपने कहा कि अब इसको कम्युनिटी के, इसको रिलीजन के कॉज में यूज किया जाए, तो प्रॉपर्टी हो गई वक्फ. ठीक है. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से काफी सारे नए रूल्स आए थे रिगार्डिंग क्रिएटिंग वक्फ प्रॉपर्टीज एंड रजिस्टरिंग वक्फ प्रॉपर्टीज. एंड फिर उसमें पिटिशंस फाइल हुई चैलेंजिंग सम पार्ट्स ऑफ इट, सेइंग दैट दे वर अनफेयर. अब सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम डिसीजन आया है, वेयर दे हैव नॉट सस्पेंडेड द एक्ट पर से, but they have put a pause on certain provisions which they feel are arbitrary या फिर unfair या फिर unreasonable. ठीक है. This is not a final verdict, this is a temporary stay. And काफी सारे इसमें प्रोविजंस की इन्होंने बात करी. जैसे वन ऑफ देम इज, एक रूल था जो कहता था कि अ पर्सन फॉर क्रिएटिंग अ वक्फ, ही हैज टू बी प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर ही कैन क्रिएट अ वक्फ. तो उस पर इन्होंने पॉज लगा दिया है फॉर नाउ. They said this is sort of questionable and discriminatory. Then there is another provision where you declare waqf on your own. waqf by user उसको कहते हैं, कि आपने बोला कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है आज से, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई. बट अब जो है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा एज वक्फ. तो वही है, कुछ चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे व्हेन वी कम बैक टू आवर पीपीटी. बट या फॉर नाउ दिस इज नॉट द फाइनल जजमेंट, दिस इज जस्ट एन इंटरिम ऑर्डर. ठीक है. ओके,
On the right hand side, you see amid a export surge, trade deficit comes down by 54%. क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, क्या होता है ट्रेड सरप्लस? देखो, अगर आपने, एक तो होता है एक्सपोर्ट विच मीन्स यू सेंड गुड्स आउट ऑफ द कंट्री, सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, एक होता है इंपोर्ट विच मीन्स यू बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। वेरी सिंपल। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट मतलब है आपका इंपोर्ट जो है आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो कंट्री में डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट है, यानी कि आपने 200 रुपए का सामान खरीद लिया, मंगा लिया बाहर से, बेचा सिर्फ 100 रुपए का, तो 100 रुपीज का ट्रेड डेफिसिट आ गया, सिंपल एज दैट। ट्रेड डेफिसिट हमारा ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ऑब्वियसली कम होना चाहिए। द लोअर द ट्रेड डेफिसिट द बेटर इट इज, विच शोज दैट एक्सपोर्ट इज डूइंग बेटर, या फिर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स इज मच लोअर। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो गया बाय ओवर 54% टू $9.9 बिलियन इन अगस्त 2025, जो कि ये हुआ करता था $21.7 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर, विच मीन्स it's a good sign, है ना? This shows improvement in terms of exports as well as lower imports. अब बाकी तो इसमें फिर नंबर्स ही नंबर्स दिए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल, उन्होंने तारीफ करी एक्सपोर्टर्स की, saying that despite global uncertainties and trade barriers they were able to boost the export performance, and that's good for us। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Aadhaar is a part of statute can be used by voters, says Supreme Court. Now, again, this is regarding the use of Aadhaar card for voter verification. We all know what Aadhaar card is. And Election Commission जो है 11 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा था फॉर वोटर आइडेंटिटी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को भी यूज करो आप एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन, बट नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। And they said that Aadhaar is part of a legal framework under which under the Representation of People Act, and it can be used for voter related processes, and voters are allowed to use Aadhaar for identity verification. This is permitted by law. अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट क्या थी पेटिशनर्स की तरफ से? एक एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने एक प्ली फाइल करी थी where he said that Aadhaar should not be recognized as the 12th document. He said that Aadhaar is not proof of citizenship and non-citizens can also obtain Aadhaar. Therefore, it should not be used for voter identification. और कोर्ट ने कहा कि आधार को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, it should be used as a valid document, because although it's not a proof of citizenship, it's definitely a proof of identity। ठीक है, तो बस वही है, जो बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं वही सारी बातें हैं। कौन सा सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का विच अलाउज आधार? दैट इज सेक्शन 23 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, विच अलाउज आधार टू बी यूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर वेरीफाइंग इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, सेक्शन 23 क्लॉज 4, ये आप लोग याद रखेंगे। Okay, row over center nixing 6 pilgrims visits in November to Nankana Sahib. Nankana Sahib is a gurdwara which lies in Pakistan. And, it's very well revered and renowned for being the birthplace of Guru Nanak Dev Ji. And a lot of pilgrims go to that gurdwara on the Guru Nanak birth anniversary, which happens in November. तो उसी के अराउंड जो है deliberation चल रहा है whether it should be allowed this year or not, उसी पे पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही है। ठीक है, सिटी बेस्ड न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो वी कैन मूव अहेड। स्टेट बेस्ड न्यूज, हिमाचल सीएम urges पंजाब हरियाणा टू शो generosity towards younger brother। Nice. Cameras placed in house to snoop on us, alleged Congress MLA। ठीक है, nothing important here। Rahul inspects flood hit areas, deadline comes for AIDMK। All politics. Delhi sex ratio dropping for fourth consecutive year, says government reports। Okay, nothing important as such है। क्या चल रहा है? दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अच्छा, अच्छी बात। हाँ, 3 missing after heavy rain lashes Hyderabad। Okay, it's all again politics, nothing relevant here। पॉलिटिक्स क्या स्वीप मारा है मैडम ने ये? नथिंग रेलिवेंट।
Okay, we're down to the editorial section, unlocking innovation with India's procurement reforms. Now, what is this all about? The context here is public procurement rules, which are sort of made for transparency and cost efficiency with regards to how government buys goods and services. Government को अगर कोई सामान खरीदना है या कोई सर्विस खरीदनी है तो कैसे वो उसको प्रोक्योर करेंगे, उसके अराउंड ट्रांसपेरेंसी, उसके अराउंड कॉस्ट एफिशिएंसी, उसके अराउंड जो है जो रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। अब ये जो रूल्स हैं इनमें इनोवेशन जो है बहुत टाइम से नहीं हुई है, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड कि इंडिया की प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम क्या है। So first of all, they talk about the mandatory use of the GEM portal, which is the government e-marketplace, even for specialized scientific tools. And this usage of the GEM portal is leading to a lot of delays in procurement. This is leading to low quality equipment. एंड साइंटिस्ट जो हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सामान मंगवाते हैं गवर्नमेंट से, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी चाहिए होते हैं ये जो नीश इंस्ट्रूमेंट है। एंड गवर्नमेंट के जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाला, उससे चीज़ें स्लो हो रही हैं। अब इंडिया ने कुछ रिफॉर्म्स करे, रिसेंटली जून में करे थे रिफॉर्म्स इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स, एंड इसमें कुछ एग्जेम्पशंस क्रिएट किए इन्होंने साइंटिस्ट के लिए टू स्किप दिस जेम वाला प्रोसेस फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। इन्होंने परचेज लिमिट जो है थोड़ी सी बढ़ा दी थी, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी वाइस चांसलर्स को, डायरेक्टर्स को टू अप्रूव टेंडर्स अप टू 200 करोड़, जिससे जो है ये डिलेज कम हो। लेकिन ये आर्टिकल कहता है अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज पेंडिंग है, जैसे ये जो 2 लाख की लिमिट है ये अभी भी काफ़ी कम है फॉर हाईटेक फील्ड्स लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी, फॉर बायोटेक्नोलॉजी 2 लाख से ज़्यादा के ही आते हैं मैक्सिमम इक्विपमेंट्स। एंड another issue is the focus on global sourcing, which is sort of sidelining Indian suppliers and Indian manufacturers. And third is the risk of improper implementation. तो ये जो institutional heads हैं इनके पास बहुत सारी power है, and the provisions assume that these guys would be acting in an ethical and efficient manner. So वही है कि implementation में थोड़ा सा risky है माहौल। अब फिर ये कहते हैं कि काफ़ी सारे जो है अलग अलग कंट्रीज़ के मॉडल्स हैं इनोवेशन ड्रिवन प्रोक्योरमेंट के, जैसे जर्मनी का मॉडल है मिशन ओरिएंटेड प्रोक्योरमेंट का, जहाँ पे उन्होंने अलग से एक एजेंसी बना रखी है। यूएसए का मॉडल है, साउथ कोरिया का मॉडल है, पढ़ सकते हो आप लोग, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए आर्टिकल, बट बेसिकली या ही टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड हाउ वी नीड टू मेक इट मोर एफिशिएंट। दैट्स व्हाट द आर्टिकल सॉर्ट ऑफ इज। ठीक है, left hand side pe you see divided state. US needs a new enlightened leadership in the two major parties. So this is in context with the recent Charlie Kirk wala assassination which happened, who was a right wing political activist, political commentator, ally of Donald Trump, and a strong supporter of the Second Amendment in US. What is the Second Amendment about? किसी को पता है? First Amendment, Second Amendment, US constitutional law किसी ने पढ़ा है? या फिर ये काफी मतलब मूवीज वगैरह में भी फर्स्ट अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट का जिक्र होता है हॉलीवुड मूवीज में। एनीवन नोज व्हाट इज द सेकंड अमेंडमेंट विद रिगार्ड्स टू यूएस? यस, राइट टू बेयर आर्म्स, गन लॉज, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%। गन लॉज की बात करता है सेकेंड अमेंडमेंट, एंड चार्ली कर्क वाज अ पर्सन हु वाज इन फेवर ऑफ दिस सेकेंड अमेंडमेंट। He was also in favor of conservative values like anti-abortion, anti-LGBTQ rights, LGBTQ plus rather, and recruitment of youth into the Republican Party. And he was shot allegedly by a person called Tyler Robinson. Motive अभी clear नहीं है, but he sort of got killed. एंड फिर ये आर्टिकल यही बताता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आइडियोलॉजिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कर्क वाज आल्सो प्रो गन कल्चर एडवोकेट, एंड दिस शोज हाउ डीप रूटेड एंड डेंजरस अमेरिका's गन कल्चर इज बिकमिंग, and this political rhetoric is now becoming very toxic, including intolerance, including exclusionary policies, pro-nativism, etc., etc. And there's no open dialogue or cross-party cooperation which is happening. तो वही सारी बातें हैं कि पॉलिटिकल क्लाइमेट है ट्रम्प के आने के बाद से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, and US needs to break this cycle of hate and violence and rebuild unity and trust. That is what the article says. ठीक है,
Then India's economic ambitions need better gender data. तो ये वही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स, उसी के अराउंड डिस्कशंस हैं जेंडर गैप के, कि women contribute only 18% to India's GDP, and despite 41% female labor force participation, only 18% of them are in फॉर्मल जॉब्स। एंड ऐसा अगर रहेगा तो इंडिया कैसे पहुंचेगा $30 ट्रिलियन तक, जो हमारा टारगेट है 2047 का। एंड दे से दैट हाउ इंडियन पॉलिसी डेटा इज नॉट प्रॉपरली जेंडर डिसएग्रीगेटेड, विच मींस वुमेन का पार्टिसिपेशन मेजर भी नहीं हो रहा और वैल्यू भी नहीं हो रहा, दोनों बातें हैं। एंड डेटा नहीं है हमारे पास, इसलिए डायग्नोसिस नहीं कर सकते, हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते इसलिए एक्शन नहीं ले सकते। So they talk about how India's first Women Economic Empowerment Index was recently launched by the UP government. वहाँ पे they are tracking multiple areas जैसे employment, education, entrepreneurship, livelihood, safety and infrastructure, and this shows that women make up more than 50% of the skill program participants, but very few of them turn out to become entrepreneurs or get access to credit and loans, which shows that system में बहुत ज़्यादा blockades हैं। पार्टिसिपेशन की दिक्कत नहीं है सिर्फ, it's also the system acting against women coming to the forefront. And what we need to do is make this gender data more universal and go beyond just counting the number of women, focus more towards retention, leadership, job quality, etc. etc. That is what they say. कि, we have to look at the bigger picture. Gender gap कोई नई चीज नहीं है, but we need to have the tools to fix it. Where we make the work done by women more visible, we tackle these systemic barriers, and we make women a part of all parts of governance as well. So वही सारी बात है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे यू सी फील्ड एंड फ्रेटर्निटी, स्पोर्ट इज पॉलिटिकल बट इट मस्ट नॉट बी अ स्टेज फॉर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दिस इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडो पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, एंड कैसे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको सॉर्ट ऑफ एक इंसल्ट टू नेशनल सेंटिमेंट बताया, एंड फिर कैसे हैंडशेक्स नहीं किए प्लेयर्स ने आपस में, शोइंग सॉर्ट ऑफ सॉलिडारिटी। तो वही सारी बातें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। Courts not to mental health as a right. This we'll discuss on the PPT. This is an interesting article. Rising obesity, children's exposure to ultra processed foods, ये आप skip कर सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल इन कास्ट क्राइम। क्या होती है एंटिसिपेटरी बेल? जब आपको लगता है कि आप अरेस्ट होने वाले हो तो आप पहले से बेल अप्लाई कर देते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, सो दैट यू आर नॉट अरेस्टेड। That is what an anticipatory bail is, and the court cancels anticipatory bail in this case of Kiran versus Rajkumar Jain, reaffirming that Section 18 of SC/ST Act 1989 bars matlab prohibits anticipatory bail for offences like caste-based assault, abuse, intimidation, and electoral retaliation. The judgment emphasizes that the courts must respect the bar on anticipatory bail, avoid mini trials at the pre-arrest stage, and apply the prima facie test, reinforcing protection of vulnerable SC/ST communities and accountability for past crimes. ठीक है। What is involution that is plaguing Chinese EV sector? ये हमारे लिए important नहीं है। Conduct of social media companies, ये भी important नहीं है। Prepare for any eventuality, PM tells Defense Ministry. Inaugurates the Combined Commanders Conference that will focus on reforms across armed forces. 3 Maoists with 1.35 crore bounty. Bounty मतलब होता है इनाम किसी को पकड़वाने का। Killed in Jharkhand. National Highway 2 won't reopen till pact is reached with Menti people, says Kukizo Council. ठीक है। Supreme Court expresses concern over non-functional CCTVs, dismisses plea to extend POSH Act to women in politics. What is POSH Act? This is Prevention of Sexual Harassment against Women, Prevention, Prohibition and Redressal Act. And they're saying that this would open up Pandora's box. Pandora's box का मतलब होता है बहुत wide range of problems एक साथ आ जाएंगी उससे। Dismissing the plea, they said, what did they say? The plea had contended that there was no rational or intelligible differentia to exclude women in politics from protections available in other professions. It said that definition of workplace and employer under Act must be expanded to political spectrum. Again, Supreme Court said agreeing with the plea to bring women political workers within the ambit. ठीक है। Okay. So yeah, basically ये जो plea इन्होंने करी थी, उन्होंने बोला कि
पॉलिटिकल वर्क स्पेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वर्क स्पेस. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है कोई भी रीजनेबल डिफरेंस एज सच नहीं है, रैशनल डिफरेंस नहीं है to exclude women in politics. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बात बात तो ठीक है, सही है. सुप्रीम कोर्ट बैक्स मूव टू rid वक्फ by user of statutory recognition. Top court did not prima facie find any substance in the argument that centuries old land, graveyards, dargahs, and mosques recognized as works through long and consistent usage over the years will be grabbed by the government. तो ये बेसिकली पेटिशनर्स का कहना था कि वक्फ बाय यूजर को आप हटाओ मत, क्योंकि फिर गवर्नमेंट जो है हड़प लेगी पुराने जो ये प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के, मॉस्क हो गए, ग्रेवयार्ड्स हो गए. वक्फ बाय यूजर क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ आप लोगों को. वक्फ बाय यूजर सिंपली मीन्स कि मान लो आप एक मुस्लिम हो एंड आप चाहते हो कि आपका लैंड जो है वक्फ लैंड बन जाए, तो यू डोंट रियली नीडेड एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पर से, आपने बस बोल दिया हो गया. अब जो है इसको नए अमेंडमेंट में अबॉलिश कर दिया गया वक्फ बाय यूजर को, एंड नाउ ओनली फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड एंड रजिस्टर्ड वक्फ्स आर रिकॉग्नाइज्ड. कोई प्रॉपर वक्फ डीड बनानी पड़ेगी, फॉर्मल वक्फ डीड विच इज मैंडेटरी फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वक्फ. एंड जो पुराने वाले वक्फ हैं जो वक्फ बाय यूजर से बने हैं अप टिल April 8, 2025 वो वैलिड रहेंगे. यानी कि 8 अप्रैल के बाद वाले जो भी वक्फ बाय यूजर हैं उनमें रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और अब भी लाइक इन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आज के बाद से भी ये लागू होगा. लेकिन दिस वुड नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 8 अप्रैल से पहले पहले जो वक्फ बाय यूजर बन गए, ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें बोली यहाँ पे, कुछ दो चार बातें बोली उन्होंने. उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट का इंटेंट है वो आर्बिट्ररी नहीं है, बट दे आर मेकिंग दिस चेंज बिकॉज इससे गवर्नमेंट लैंड पे बहुत ज्यादा रैम्पेंट इंक्रोचमेंट हो रहा है. यानी कि मान लो किसी आदमी ने, मान लो कोई रेलवेज का लैंड है, वो बोल दिया कि ये मेरा लैंड है और अब से ये वक्फ का लैंड हो गया, तो वक्फ बाय यूजर से वो वक्फ प्रॉपर्टी बन गई, तो एक तरीके से इंक्रोचमेंट हो गया गवर्नमेंट लैंड पे. एंड दे सेड दैट आंध्र प्रदेश में रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड वाज नोटिफाइड एज वक्फ, एंड स्टेट गवर्नमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको वापस लेने के लिए. एंड दैट इज व्हाई दे आर सॉर्ट ऑफ अबॉलिशिंग दिस प्रोविजन ऑफ वक्फ बाय यूजर. एंड जो आपके वक्फ मैनेजर्स या फिर जिनको प्रॉपरली जो टर्म यूज होता है मुतव्विल्स, उनके पास टाइम रहेगा काफ़ी ज़्यादा टू रजिस्टर दिस वक्फ बाय यूजर वाली जो भी लैंड्स हैं. एंड दे कैन नॉट क्लेम दैट द लॉ इज अनफेयर बिकॉज इट्स नॉट, इट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट. अब पेटिशनर्स ने जो है दूसरी साइड से बोला कि गवर्नमेंट इस तरीके से बहुत ज़्यादा पुराना जो है रिलीजियस लैंड क्लेम कर लेगी, वापस ले लेगी. तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको अप्लाई कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 8 अप्रैल के बाद वाली प्रॉपर्टीज पे ही अप्लाई होगा, उससे पहले वाली प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोर्ट ने ये क्यों किया है वक्फ बाय यूजर को बैन, बिकॉज दे सॉ दैट देयर वाज ऑलमोस्ट 116% राइज इन वक्फ लैंड इन द पास्ट 10 years, which was due to the abuse of this वक्फ by user वाला provision. तो वही सारी बातें हैं, ठीक है. Opposition welcomes Supreme Court order in Waqf Act, says it vindicates their stand. Muslim bodies called decision victory of the spirit of Constitution. Supreme Court order provides clarity that Waqf reforms of government stays intact. Animal acquisitions are as per law. SIT form by top court gives clean chit to Vantara. Of course. वंटारा को क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, ठीक है. कश्मीर फ्रूट मार्केट शट डाउन ओवर हाईवे क्लोजर. India gets license to scour Indian Ocean for precious metals. This we'll discuss on the PPT. UGC gets 8 weeks to include norms on tackling caste bias. US chief negotiator and Indian counterpart to talk trade today. देखते हैं इसमें क्या होगा, कल पता चलेगा. Trump to arrive in UK as Starmer's leadership is tested. Nepal PM expands cabinet with 3 new ministers. India keen to preserve ties with US. Sports में as such कुछ ज़्यादा नहीं है. PCB is demanding match referee Pycroft's removal following the handshake rule. Duplantis soars into immortality. तो ये वर्ल्ड जंपर है, पोल वॉल्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों इन्होंने नया, डुप्लांटिस ने. स्वीडिश प्लेयर है मोंडो डुप्लांटिस. वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 14th time with a jump of 6.3 meters after securing a straight world title Monday. Nice.
ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, इतना ही है। लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी, do the three articles which we're going to discuss, then we'll move to our Menti quiz. Good evening, Priyanshi. Anything, what is your college fee per annum in Nalsar? Ballpark 3 लाख रुपए साल के पकड़ लो आप, सारे खर्चे जोड़ के 3 lakhs per annum. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड. सो या वक्फ वाला जो है न्यूज़, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक अ बैलेंस बाय स्टेइंग क्रूशियल पोर्शंस ऑफ द वक्फ एक्ट व्हिच इट फाउंड टू बी prima facie arbitrary, while refusing to freeze the law in its entirety. In the judgment on a plea for an interim stay on law, Justice B.R. Gavai and Justice A.G. Masih reasoned that parliamentary legislation was naturally presumed to be constitutional, as the lawmakers would only have the public's best interest in mind. So much so that even discrimination woven into the statute would be based on adequate grounds. Lekin this reasoning did not stop the court from staying, like putting a stay order on key provisions of the 2025 Act, including the one which required a person intending to create a waqf to prove that he had been practicing Islam for 5 years. Court said there was nothing wrong in requiring a person to prove that he had been practicing the faith for 5 years, considering waqf endowments were misused as clever device to tie up property in order to defeat creditors and generally to evade the law under the cloak of plausible dedication to the Almighty. बेसिकली आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आपको मान लो किसी को उधार वापस देना है, क्रेडिटर्स हैं कोई, तो आप जो है फटाफट जो है आप मुस्लिम बन गए और आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी, तो आप बच गए उससे. तो दैट इज व्हाट दिस मींस. However, the bench found it arbitrary that the law failed to provide a basic mechanism or procedure to ascertain whether the person had indeed been practicing Islam for at least 5 years. कैसे प्रूव करोगे आप कि आप 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो? Court directed the provision should be shelved, मतलब put on hold until government came up with a mechanism. Court found totally unconstitutional a proviso in section 3C which mandated that Waqf would lose its character the moment someone raised a doubt that it was government property. The Justice Gavai said to any government property, though any government property was public asset and a designated officer had every reason to conduct an inquiry, it could not suddenly cease to be one before the designated officer completes the probe and submits the report. Court state parts of Section 3C that allowed the designated officer and government to unilaterally alter revenue and Waqf board records, respectively, changing the status of Waqf property to government property, directed Central Waqf Council to have not more than 4 non-Muslims out of total 22. State Waqf Board would limit the number of its non-Muslim members to 3 out of 11. And they ordered that CEO of State Waqf Board must be picked from the Muslim community as far as possible. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं. बाकी the editorial article quotes not to mental health as a right. So this is in context with a recent judgment. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, which was anchored in the anguish of a father who had lost his 17-year-old daughter, a NEET aspirant, in a Vishakhapatnam hostel. The result was not only an order shifting the investigation to CBI, but also much needed acknowledgement of mental health to be a part of right to life under Article 21. Systemic neglect of mental health, along with exploitative culture of coachings and indifference of school and universities, produce an environment where young people become vulnerable to harm. And by creating safeguards, state and institutions become complicit, matlab part of this process, where institutions create or ignore conditions that drive individuals to the brink. The line between personal tragedy and institutional culpability, matlab you know, their culpability को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? आरोप नहीं बोलेंगे. Culpable means liable कह लो, like कितने वो liable हैं for that particular crime, that becomes blurred. Liability for that offense. The Mental Health Care 2017 Act of 2017 already enshrines right to receive mental health care, but it has not been implemented consistently. Enforcement mechanisms are poor. The entrenched mental health in Constitution Court established an elevated normative benchmark. Citizens can insist on safeguarding their psychic health as a fundamental right, not just a statutory right. So पहले जो है mental health was a statutory right coming from the Mental Health Care Act of 2017, but now this is a fundamental right. To ensure that this is not becomes a rhetoric, court ordered a package of building interim orders, now referred to as the SAHA guidelines. Schools, colleges, hostels, coachings are required to proactively develop support systems to address mental health. States and UTs
Will bring rules to enforce in 2 months and obligate the setting up of district level monitoring committees until Parliament passes a full code. These guidelines have legislative force. That means the force of a law. So ये important है आप लोगों के लिए. Saha guidelines. This can be asked in exam. ठीक है. Next up is an article which talks about India getting a license to scour Indian Ocean for precious metals. The exploration contract जो हमें मिल गया है from ISA, which is the International Seabed Authority, to look for precious metals in the Northwest Indian Ocean. This is the first license granted globally for exploring polymetallic sulfur nodules in the Carlsberg Ridge, said M. Ravichandran, who is the Secretary of Ministry of Earth Sciences. These nodules are concentration of rock found in deep ocean, said to be rich in manganese, cobalt, nickel, and copper. The Carlsberg Ridge is a 3 lakh square kilometer stretch that lies in the Indian Ocean, specifically in Arabian Sea and Northwest Indian Ocean, forms the boundary between Indian and Arabian tectonic plates, extending near Rodriguez Island to the Owen Fracture Zone. For exploration in areas part of the high seas or part of the ocean that is so far from any country that it is not part of the territories, they must obtain permission from the ISA. 19 countries have such exploration rights as of now. India ने 2024 जनवरी में अप्लाई किया था for two regions in the Indian Ocean. One is the Carlsberg Ridge, which has been granted. Second is the Afanasi Nikitin Sea Mount, which is yet to be approved. ANS is located in Central Indian Ocean. Territory has been claimed by Sri Lanka for exploration rights. Countries can claim up to 350 nautical miles from their coast as continental shelf. Those in Bay of Bengal can, in theory, claim up to 500 nautical miles as per UNCLOS. अब ये क्या है? UNCLOS, this is a autonomous international organization established. Sorry, this ISA is an autonomous international organization established under 1982 United Nations Convention of Law of Seas and 1994 agreement relating to implementation of UNCLOS. Headquarters है इनका Kingston, Jamaica. And ये हम बात कर रहे हैं Seabed Alliance जो है. 168 member states, including India and EU area under jurisdiction, cover 54% of total area of world's oceans, ensures effective protection of marine environment, exploration activities, deep sea minerals, marine environment, etc. ठीक है, ये तो पुराना है, इसको स्किप कर दो, हम कल कर चुके हैं. Let's look at the vocab for the day. The first word is finesse. Finesse का मतलब होता है एकदम बारीकी, डिटेल्स के साथ, डेलिकेसी के साथ किसी चीज को ऑपरेट करना. स्किल, सटल्टी, एक्सपर्टीज. Inadequacy, incompetence, ineptitude are antonyms. These are true believer, but sadly lacks finesse. Next word is ostentatious. Ostentatious मतलब होता है दिखावटी, characterized by vulgar or pretentious display designed to impress or attract notice. Showy, pretentious, obtrusive. Antonyms are quiet, understated, unflamboyant. Actually, he has a lot of debt. He's just living an ostentatious life. Last word is poignancy. इसका मतलब होता है evoking sadness or regret, pathos, sadness, pitifulness. The film contains moments of almost unbearable poignancy. Mindness, softness are antonyms. And that brings us to the end of today's Hindu analysis, but not the end of the class because we have our Menti quiz. The code for today's Menti quiz is 24752096. 24752096. For people who are new to the process, Menti quiz is a quiz which we do twice a week. And for that, you need to go to www.mentimenti.com and put in this number code. And आप code quiz तक पहुंच जाओगे. And then we'll start the quiz. जल्दी से आ जाओ सब लोग. How is NLU Mumbai? MOF का क्या मतलब है? NLU मुंबई तो सही है, अच्छा है. MNLU दो तीन है, एक तो नागपुर में है, एक जो मेन कैंपस है मुंबई वाला वो है. Okay, jaldi se join the quiz, guys. 24752096. I'll also present it on your screen. Give me a moment. All right, this is today's Menti quiz on geopolitics. 24752096. You guys have 10 seconds to join. Jaldi se aa jaओ.
Let's see how many of you have joined. 25 players. तो काफी कम है आज तो लोग भाई. नीड एटलीस्ट 35 प्लेयर्स यार. ऐसे कैसे चलेगा. पीडीएम इज सेइंग सर नो प्लीज. किस चीज के लिए नो कह रहे हो आप. जल्दी से आ जाओ मित्रों. I'll waiting for 15 more seconds. Can we do 30 people? यार 30 लोग तो होने चाहिए कम से कम. Menti no? What do you mean by Menti no? पीडीएम is saying I am ओडिया भाई. पाई का क्वेश्चन was a sweet for me. कौन सा पाई का क्वेश्चन. Levi is saying अच्छा पाई का रेबेलियन के बारे में बता देना. पाई का रेबेलियन आई थिंक अर्ली 1800s में हुआ था. And this was a Odia rebellion against the East India Company. रूलर कौन थे उनके. जगबंधु नाम था उनका. बख्शी जगबंधु वॉज द लीडर. गजापति वहाँ के जो लोग थे उनके लीडर थे वो. एंड द रेबेलियन डिड नॉट सक्सीड एंड दैट एंडेड द पाइका रूल इन ओडिशा बैक देन. इतना ही पता है मुझे अभी पाइका रेबेलियन के बारे में. बाकी इससे ज्यादा तो मुझे अभी पढ़ के बताना पड़ेगा. जी के रिवीजन स्ट्रेटजी कब लेंगे. जल्दी ही जल्दी ही जल्दी ही लेंगे. चलो स्टार्ट करें आज का क्विज. आज लग नहीं रहा ज्यादा लोग आए हैं. कोई बात नहीं. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्विज. We'll start off with an easy question. It's Goma. Goma was the city which was captured in early 2025, became a major flashpoint in eastern DRC. Kinshasa तो उनकी capital है जो बहुत ज़्यादा दूर है. It's not Kinshasa or Bukavu. It's Goma, which I'm referring to. नहीं एक ही आंसर है इसका. गोमा ही आंसर था जो विच आई वाज लुकिंग फॉर. भाई काबू आई थिंक बाद में आया है इन द फोर फ्रंट. नीमो वॉज द फास्टेस्ट. देन वी हैव आशिम ओकीपोकी एंड वाओ क्या नाम है ओकीपोकी. सिद्धि एंड पीडीएम. Okay, let's move to the next question. I think this is also another easy question. 31 players now. Nice. Let's go to question number 2. ये तो और ज्यादा इजी क्वेश्चन है. रवांडा इज द राइट आंसर. तो हमने कल परसों ही डिस्कस किया है यार. रवांडा एंड डीआरसी के बीच में ही है ये कॉन्फ्लिक्ट. M23 वाला. इट इज रवांडा. A lot of people get 1,000 points for this question. Nemo and Steph outliers in the quiz. First two spots. Then we have Cow, Mimi, Nan Khatai Paglu. Kya baat hai. Then we have Dark Knight, Vriddhi, Nicholas, Sneha, and Vanisha. All right, third question. We have 31 players. Let's go for it. In 3, 2, 1. Another easy peasy question.
2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कौन है ये एक इंसान जिसका ये भी गलत हो गया है। आई हैव अ पर्सनल बीफ विद यू। ये कैसे गलत कर सकते हो यार। सुशीला करके 3 दिन से न्यूज में चल रहा है यार। छोड़ दो क्लैट की तैयारी अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो वेरी बैड है। आई एम होपिंग दैट वाज अ मिसक्लिक जिसने भी वो गलत किया। ओके, Nicola had the fastest response. Pretty much same people on the leaderboard. So we'll move to the fourth question. US, Egypt, and Qatar, these were the ones who were sort of mediating the Gaza ceasefire proposal. Especially Qatar had a big role. And this is relevant because recently अभी Israel ने Qatar पे attack कर दिया. तो relevant question. Dark Knight had the fastest response. Dikshita is now on the leaderboard. Rath is also on the leaderboard. That's pretty much the same people. So we'll move ahead to question number 5 out of 15. Here it comes in 3, 2, 1. Let's go. Another easy question. I told you आज का quiz बहुत easy quiz है. अरे आप लोगों ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा क्या? मैंने पूछा था what was the formal justification given by Nepali government for the ban, not the actual reason. The actual reason was preventing anti-national content. The formal justification was platforms failing to register under news. अरे यार जल्दबाजी कर जाते हो आप लोग. ओह, ध्यान से करना था ना. गलती से क्लिक हो गया. बी केयरफुल. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. एक सेकंड के लिए तो मुझे डाउट हो गया कि मैंने गलत आंसर तो नहीं मार्क कर दिया है. इतने सारे लोगों ने गलत आंसर दे दिया. ओके, नीमो हैज टेकन अ बिग लीड. द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स. डार्क नाइट, नानकटाई, पगलू, वॉटसन, दीक्षिता, आशिम, ओकी पोकी, निकोलस, वृद्धि एंड स्नेहा. Okay, let's move to question number 6. 30 players with us. Question 6 coming for you all now. Another easy question. 7th, 8th May, that's the right answer. That is when Operation Sindoor was carried out. तो सबका सही होना चाहिए था. 4 लोगों का भी गलत क्यों हुआ ये? चलो सही है. Chandralekha is now on the leaderboard. Nankatai Paglu had the fastest response. All right, let's move to the 7th question. We are halfway into the quiz. 7th question coming up for you all now. In 3, 2, 1. Easy question again. 9 terrorist infrastructures were targeted by India in Operation Sindhu, according to the official statements. Again, so 9 terror structures spread across Pakistan. Okay, Nemo again with the fastest response on first. Then we have Nankatai Paglu, Nicholas, Chandralekha, Dark Knight, me, Vanisha, Aryan, CSK fans, Ashim, and Mimi. Okay, question number 8 out of 15, 30 players with us. Let's go to question number 8. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. दिस इज द आईरिस टी मिसाइल सिस्टम. एक आईरिस टी है और उसके अलावा एक पेट्रियट करके भी मिसाइल सिस्टम है. दीज आर द टू विच जर्मनी इज प्लानिंग टू गिव टू एंड हैज गिवन टू यूक्रेन. इट्स आईरिस टी. जीएमएस टी तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैंने खुद बनाया है.
डिवाइस सेइंग मेंटी चीटिंग कर रहा है, मेरे सारे आंसर सही हैं फिर भी लो रैंक पे रख रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट फास्ट इनफ. Okay, only two people got this one right. Ashim and Nemo. Tough question तो था ये. And क्या तो लंबी jump मारी आशिम ने with this correct response. Okay, question number 9. We have 30 players. Ninth question, here it comes. Yes, this is the Dnipro river. Dnipro या Dnipro जो भी आप बोलो इसको, which is a front line in southern Ukraine and उसके around conflict चल रहा है. Correct. Me had the fastest response. That's pretty much the same leaderboard. So we'll move to question number 10. Question number 10 for 30 people. Here we go. थोड़ा सा tough question है ये. This is Alexander Sersky, the current commander in chief of Ukrainian armed forces. अब रशिया यूक्रेन में मैं क्या पूछूं आप लोगों से, ये सब तो क्वेश्चंस पूछूंगा, ये थोड़ी पूछूंगा कि प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन का, तो सबको पता है. तो ठीक है, अलेक्जेंडर सर्स्की इज द राइट आंसर. Aradhya is now on the leaderboard. Hermione is now on the leaderboard. Nemo still on first. Nankatai Paglu, then Ashim, Nicholas, Dark Knight, Chandrelekha, Vriddhi, me, Aradhya. Fastest response. And Hermione. Okay. 11th question coming up for you all. Easy one. Another easy question. Yes, this is job quota reservations. We've discussed this multiple times. That is where the Bangladesh protest started. Nicholas had the fastest response. Let's go to question number 12 out of 15. Question number 12, here it comes. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन. Knew it. The right answer is she had served 4 terms before and her 5th term was going on. And consecutive, अगर मैं आपसे पूछता how many terms she had served consecutively before being ousted, तो 3 would have been the correct answer. 3 consecutive terms पूरे हो गए थे एंड इन टोटल 4 टर्म्स पूरे हो गए थे. 4 टर्म्स वो पूरे कर चुकी थी, 5वां चल रहा था जब गड़बड़ हो गई. ठीक है, सो 3 वुड हैव बीन द राइट आंसर अगर कंसेक्यूटिव लिखा होता तो. ठीक है, राइट आंसर इज 4. Leaderboard पे only Ashim got this one right. Interesting. Baki kudos to the other person who got this right, who's not on the leaderboard. मैं सेइंग जब सब आंसर सही हो रहे हैं तब मेंटी लैग कर रहा है, क्वेश्चन ही मिस कर दो आते हैं. चीटिंग यार है, कोई चीटिंग नहीं है, एकदम वैलिड क्वेश्चन था, वैलिड आंसर था. 5th टर्म उनका चल रहा था, 4 पूरे हो चुके थे. मैंने आपसे यही तो पूछा कितने पूरे हो चुके थे. मैंने चीटिंग क्या है उसमें. आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो. इसमें तो तुक्के मारे हैं सबने दबा के. मोहम्मद शाहबुद्दीन,
Who was बांग्लादेश का प्रेसिडेंट ड्यूरिंग शेख हसीना's ouster? लो रैंक दे रहा है रीवा को मेंटी। बात करता हूँ, ईमेल लिखता हूँ उन लोगों को, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? Okay, Aradhya had the fastest response for this one. Nemo is on first, Nankatai Paglu on second, then Steph, Dark Knight, Chandralekha, Nicolo, Aradhya, me, Jimmy McGill. Oh, what a reference. क्या बात है. Sneha is also there on the leaderboard. Question, by the way, this is from Better Call Saul, for people who don't know, Jimmy McGill. Question number 29. Better Call Saul is a TV series. Black Sea is the sea route which Ukraine reopened for grain exports despite Russian threats. It's not Baltic Sea, this is the Black Sea. थोड़ा सा ज्योग्राफी पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, रशिया यूक्रेन के आसपास की. Okay, Radhya makes a big jump with that question. Ashim had the fastest response. Nemo still on first. Then we have Nankadai Paglu. Then Ashim. Then Aradhya, Dark Knight, Chandulekha, Nicolo, me, Pingu Penguin. Arey baapre. Gazab nostalgia. Pingu Penguin. Jimmy McGill is also on the leaderboard. Okay, last question of today's quiz. Question number 15. Here we go. It's on your screen now in 3, 2, 1. दिस इज किंग पृथ्वी नारायण. किंग ज्ञानेंद्र की भी काफी बातें हो रही हैं, वाज द लास्ट मोनार्क, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी किंग किंग पृथ्वी नारायण की, जिनका पोर्ट्रेट देखा गया नेपाल के आर्मी चीफ के पीछे एंड ही एड्रेस द नेशन. काफी उस पर स्पेकुलेशन हुए कि क्यों ये पोर्ट्रेट यहाँ लगाया गया है, क्या इसकी मैसेजिंग है, इज दिस प्रो मोनार्की का कोई सिग्नलिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. किंग पृथ्वी नारायण इज द राइट आंसर, इट्स नॉट किंग ज्ञानेंद्र. किंग ज्ञानेंद्र का भी नाम काफी बार आया during the protest. But yeah, the right answer is Prithvi Narayan Shah. Okay, Nemo wins this quiz. Clinical performance, fantastically played. I don't know who you actually are, so please tell me in the chat box your actual name, Nemo. But yeah, well played. Well played others as well. Ashim, hard luck this time, second position. Then we have Nankhatai Paglu, fantastic performance. Aradhya, well played. Dark Knight and Chandralekha, Jimmy McGill, Nicolau, Vanisha, and everyone else who performed really well. Me as well. Okay, चलो बहुत बढ़िया. प्रियांशी नहीं हुआ, अरे क्या बात है प्रियांशी, लवली परफॉर्मेंस टुडे. अच्छा लेंदी तो था क्विज भाई, तो 15 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? और कितना आपको 50 क्वेश्चन का क्विज कराऊं क्या मैं? एनालिसिस भी तो करना होता है साथ में, टाइम भी तो देख के चलना पड़ता है. प्रियांशी सेइंग हर बार रियल नेम से एंटर नहीं करना चाहिए. अरे क्या बात है, लवली. ठीक है. ओके, आई होप यू गाइस एंजॉयड द क्विज. आधे से जब अच्छा लगा, जब अच्छा होने लगा क्विज तब खत्म हो गया. ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. चलो नेक्स्ट क्विज. श्रेयस वाज नान खटाई पगलू. क्या बात है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस श्रेयस, लवली परफॉर्मेंस. 4th 16 तक डाउनफॉल हो गया. 3 क्वेश्चंस गलत हो गए, कोई बात नहीं, दैट्स ओके. इसराइल पैलेस्टीन से भी पूछ लेते, मुझे पता था आप लोगों को प्रिपेयर करके आओगे ना, इसलिए उससे कम क्वेश्चंस पूछे मैंने जानबूझ के. थोड़ा सा आई एम क्रूअल दैट वे, बट कोई नहीं. आराध्य सिंह नेक्स्ट क्विज हार्ड बनाना. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्विज हार्ड बना देंगे. ओके, नेक्स्ट क्विज आप लोगों को किस चीज पे चाहिए? व्हाट डू यू गाइस वांट द नेक्स्ट क्विज टॉपिक टू बी? जियोपॉलिटिक्स हो गया, और बताओ अब क्या करना है? स्पोर्ट्स पे करना है, किस चीज पे करना है? एससीओ. एससीओ तो छोटा टॉपिक है. एग्जाम मिशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया. चलो ऐसा करते हैं, एससीओ तो नहीं, उस पर करते हैं सारी जो रिसेंट समिट्स हुई हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल या फिर इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं, बी इट एससीओ, बी इट ब्रिक्स, बी इट ऑल द अदर्स,
उसके अराउंड कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल समिट्स, दैट इज द टॉपिक। Cool. International summits and international organizations. Okay, it's decided, it's done and dusted. I'll see you all in the next Menti quiz on Friday and in the next Hindu analysis tomorrow, same time. Ciao. Till then, take care. Bye bye. Signing off. Good night.